Hi guys, my name is Manohar and finally we'll be covering Quants today and final week. I hope you all have aligned your routine and schedule according to your appointed time, and even if not, do try. It definitely helps. Further talking about Quants and the strategy, I was a little hesitant about sharing this because this was the most subjective strategy that I came up with because it worked for me. And जो वो iteration वाला था, जो 3 iteration वाला जो conventionally use होता है कि first iteration में आप easy question निकालो, second iteration में a little difficult, and third iteration में if you have time then the most difficult ones. I could not like this was the core basic strategy that I would use, but then something that I realized was what sometimes I would find easy would not conventionally be found easy by a lot of people, and what I would really struggle with would sometimes conventionally be very of medium difficulty level. But that definitely depends on also your topic wise say preparation. So if a medium sum is there in probability, then maybe I would be if I try to solve it, I would be able to resolve because मेरे core concepts तो clear थे. But I had this sort of disinclination towards the topic, right? And that definitely comes into play, and that's why subjectivity matters. So today I'll not be solving anything, but I'll definitely show you how show you some basic key takeaways that you should have while you are attempting your final paper. One of them, the biggest one, being you need to be emotionally distant from the paper, because a lot of times a lot of people, mostly engineers, they end up dedicating so much time to this particular question because उन्होंने अभी वो मकसद बना लिया कि हाँ ये तो solve करना है, and first glance पे वो solvable भी लगता है, and it definitely could be solved, but the traps in quants are not very apparent. The traps in quants are like, अगर या तो आप फास्ट हो, नहीं तो मे बी आप उसमें ज़्यादा टाइम देने वाले हो, राइट? DILR का ट्रैप्स आर वेरी ऑब्वियस कि हाँ दिस पर्टिकुलर सेट इज अ ट्रैप, बट यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्टिविटी का भी एलिमेंट आ जाता है. सम स्टूडेंट्स हैव JEE बैकग्राउंड, सम स्टूडेंट्स हैव some students are they have given Olympiad and what not, so quants में काफ़ी differences भी पड़ जाते हैं. So something that an attitude that you need to go for the paper with is that it doesn't matter how many questions of a particular topic I've done. अगर वो topic दिखा मुझे and वो topic का मुझे मालूम पड़ रहा है कि this is a difficult sum and it is going to take a lot of time, then prioritize and don't emotionally get invested into अरे मैंने इसका बहुत sum solve किया, आज नहीं किया तो नहीं जमेगा. वो शायद आपको टाइम मिला तो आप बाद में solve कर सकते हैं. Okay, so let's get into this one paper. This mock is mock number 16 and आपको basic fundamental समझाता हूँ कि मैं filter कैसे करता था question, right? So there were 3 things that would be followed. आपके basically paper में 3 color आपको दिखेंगे. One, if you have marked the answer, then that particular question will turn green, right? This thing will turn green. Second is the option of you having that particular option of mark for review. So the question turns purple, I think, right? And in case you have not even marked for review or have not answered, then the question turns red. So by sheer virtue of the questions getting color coded automatically, I use that. यहाँ पे अभी unlike my VARC strategy or my DILR strategy, I wouldn't write it down. I would simply mark it down because यहाँ पे sets नहीं बन रहे, right? यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए कि अच्छा RC ये point से ये point तक है या ये particular DILR का set ये point से ये point तक है. Each question is different, each set is different, and that's why I utilize that time save करने के लिए. So how exactly do I go about it? The sums that I'll be looking at and I'll be solving right off the bat will turn green. If I think that this particular question should go in the second iteration, then I'll mark it for review. So वो purple हो जाएगा. And if I think that this question deserves to be in the third iteration, right? Third scanning में, so वो question mark हो जाएगा red. Okay. Now today as we go about the questions, I'll just be telling you मैं उसको कौन से bucket में डालता था, ठीक है? And अगर कोई easy sum रहा, उसका approach मुझे एकदम apparent रहा, मेरा thought process behind putting it in that bucket, तो मैं वो आपको वो भी समझा दूंगा. तो it gets clearer कि final day में if when you're panicking, you have something to hold on to, something that will stick from this particular video. Okay. That was a 5-minute introduction. Let's actually get into it now. Taking the first sum, it's from
Question number 51 again, mock number 16. So the question seems I'm so sorry, the question seems short, it's very small, right? Directly मेरे को apparent है, logs also मेरा एक strong suit था. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनको A और B का relation चाहिए होगा. So यहाँ पे 2 चला जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड इसका मॉड है तो A प्लस B इक्वल टू प्लस माइनस 100 हो जाएगा, राइट. यहाँ पे अगेन सेम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हाफ ऊपर चला गया 2 बन जाएगा, राइट. एंड log 10 है, सो B अपॉन मॉड A इक्वल टू 2 हो जाएगा, वो रिलेशन आ गया. B इक्वल टू 2 इंटू मॉड A होना चाहिए, एंड देन आई कैन वर्क आउट. सो आई डेफिनेटली बी सॉल्विंग इट राइट ऑफ द बैट. इजी सम है, डजंट मैटर. मूविंग ऑन. ग्रीन मार्क होगा 51. Predicted 25% chances of rain Saturday Sunday, however thrice is likely to rain. Okay, I am not as comfortable with probability, so but okay, that's not even probability. If the probability, okay, it is probability when A and B are relative prime integers. Okay, skip. ये मेरा हो जाएगा red, because relative prime integers का मैंने फिलहाल मेरे को concept भी याद नहीं है, right? So I'm strictly talking about where I'm coming from. अभी मैंने पॉलिश नहीं किया अपना क्वांट्स का फॉर्मूलाज एंड ऑल, सो व्हाटएवर आई एम रिटेनिंग आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं इस पे मेरे को कुछ ऑब्वियस सा स्ट्रैटेजी भी क्लिक नहीं हो रहा है, सो आई विल मूव ऑन फ्रॉम दैट. PQ ट्रायंगल, P is equal to 90 degrees, length PQ, PR equal to 60 and 80 respectively. PS is perpendicular to QR and ST is perpendicular to PQ. Okay, minimum possible time required to go from T to S. स्पीड 14.4. सो दो पर्टिकुलर दो सेक्शंस का कॉम्बिनेशन है. एक तो ज्योमेट्री हो जाएगा बेसिक सा ट्रायंगल का, एंड तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस वो भी बहुत बेसिक सा. नाउ इसमें PQ का दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स का थियरी बैठेगा, एंड मुझे ST इजीली मिल जाएगा फिर, बिकॉज एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स फिर अपन ये कर सकते हैं. सो या I'll be solving this right off the bat. ठीक है. Another element that you could be using to think if this particular question needs to be solved right now or not is the length of the question. Sometimes there are way too many elements, and like 50-second question में ही देख लीजिए, एक तो क्वेश्चन भी इतना लंबा है, उसमें एलिमेंट्स भी इतने सारे, प्लस मेरा टॉपिक वाला नहीं है, लाइक मेरे को प्रोबेबिलिटी इतना कंफर्टेबल नहीं था, राइट. सिंपल एज दैट. चंचल टेक्स ट्वाइस, मेक पेंटिंग दोज आरती भारती टुगेदर टेक्स 12 दिन है. चंचल कैन मेक इट इन 20 days. हाउ मेनी डेज कैन आरती अलोन मेक. ठीक है, चंचल और चंचल टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज. आरती चंचल का हमको रिलेशन है, इधर 12 दिन ले रहा है, ये 20 days ले रहा है, एंड मेरा वर्क का बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी कॉन्सेप्ट है, एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाज ग्रेट. सो 12 days है, 20 days है, इसका अगर अपन LCM लेंगे तो 60 हो जाएगा, राइट. सो AB विल बी एबल टू डू 5 units of work per day, and BC will be able to do say 3 units of work per day. A और C का रिलेशनशिप है, सो वो एलिमिनेट हो जाएगा, A का अपने को आंसर सोलो आ जाएगा. ठीक है, B के टर्म्स में हम लिख देंगे अगर दोनों इक्वेशन में, क्योंकि B कॉमन एलिमेंट है. सिंपल, ये सॉल्व कर दूंगा मैं इमीडिएटली. ओके, 8 companies working together produce special product, investment done. okay, too many elements, could be easy, सॉल्व भी हो सकता है, बट थोड़ा बड़ा है, सो आई विल मार्क दिस एज पर्पल. ठीक है. Next, guys, you need to look at this one thing also. I'm not even reading the very long sums because वो हो सकता है I'll be able to, because but यहाँ पे देखिए सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का गेम लग रहा है. ठीक है, प्रॉफिट्स है. ठीक है, सो ये पॉसिबल है कि सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है. सो मैं उसको रीड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो रीडिंग दैट ऑल्सो विल वेस्ट टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली कीपिंग इट आगे के लिए, राइट. Mahesh is playing bowling, taking several turns, average 1. Okay, next turn scores 116. टर्न्स हो सकता है, इसको पर्पल कर देते हैं आगे. एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पे दिस इज वेयर आई ऑल्सो नीड टू मेक अनदर क्लैरिटी दैट माई पर्पल वंस while I'm doing the second iteration can also turn red. ठीक है, so not necessarily, अगर मैंने कुछ particular question नहीं पढ़ा है right now and I'm thinking कि इसको मैं पर्पल के टाइम पे देखूंगा, so that also means that there's a possibility कि वो it could be even more difficult than I actually anticipated it to be. Okay, that is a possibility. Ladder leans against the wall, when it bottom move 2 meters away from the wall, top press against the foot. Conventional sum है आपका ये वाला, right? या कन्वेंशनल सम है ये आपका, एकदम सा 90 डिग्री वॉल के साथ बन रहा है, लैडर लीन हो रहा है, थोड़ा मूव कर लिया, परफेक्ट. लेंथ ऑफ द लैडर, दिस विल बी फाइन, ये कर लेंगे अपन इमीडिएटली.
then which will be in terms of r. Okay, okay, so इसको हम हाफ ले लेते हैं उधर. Okay, ठीक है. Okay, 3 बार हो जाएगा बिकॉज 8 है 2 है, सो 3/2 + 1 हो जाएगा. राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया. log 4 to the base r को हम log 2 में कन्वर्ट कर देंगे. ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर log 2 है, ये भी log 2 है, देन इक्वेट हो सकता है. देन आपका सीधा सा इक्वेशन आ जाएगा. सिंपल, परफेक्ट. आई विल बी डूइंग दिस सम. PQR is a triangle, semi-parameter, very good. Perimeter is 25, so perimeter will be 50. PQ equal to QR, altitude QS equal to 5. Find out the area of triangle PQR. Okay, PQR, okay. 25, PQ equal to QR, altitude QS उन्होंने दिया हुआ है, QS दिया हुआ है, PQ equal to QR, okay. Q ऊपर है, अभी QS होगा, sorry. Okay, find out the area of PQR. Yeah, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा guys. Yeah, mensuration है. This can be done too. इतना difficult नहीं लग रहा है ये sum. Yes, I'll definitely try to do the sum because I was comfortable with the idea. Now see this one. Even though this could be a definitely easy sum. ठीक है, ये आपको दिया है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड इट्स अ शॉर्ट सम टू. पढ़ने में तो काफी छोटा क्वेश्चन है, बट मुझे इसका थियरी कुछ याद नहीं है फिलहाल. राइट, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू का मुझे एक ही थियरी याद है, दैट द वैल्यूज हैव टू बी एज क्लोज टू ईच अदर. लाइक a + b = 10 होगा, सो द प्रोडक्ट ऑफ द टू a b विल बी मैक्सिमम व्हेन द टू वैल्यूज आर इक्वल. सो 5 and 5, 25 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. So maximizing the value का वो theory concept मुझे याद है, but I have not brushed upon it and I am a little slow at this. So इसको मैं डालूंगा या तो purple नहीं तो red में, depending on what level you are at. I might put it in red directly, yeah, because nothing is clicking right now. Next, in the biggest oil tanker ship in the world can be filled any of the n inlet pipes. Okay, बड़ा question, but can be solved. How many hours work वाला question है, solve हो जाएगा. purple में जा रहा है, मैं अभी directly solve नहीं करूंगा. 8 kg toothpaste, 2/5 aluminium hydroxide, rest is calcium carbonate, 10 kg, another 2. Very good. So आपको दोनों के मिक्सचर में ये directly मैं solve करूँगा. Yes. There's no second guessing this one. I'm definitely solving this right away. Green question. Group of 11 delegates participated, recently conducted, jet lag. Okay, relative prime positive, where x and y relative v prime positive, and find the value of x plus y. Probability not comfortable, red. बाद में देखो, अलाइनमेंट ही नहीं है. राइट, अलाइनमेंट ही नहीं है मेरा ना, मेरे को ना probability में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है फिलहाल. आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट एज मच, राइट, एंड मेरे को कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा है फिलहाल. एंड द क्वेश्चन इज टू बिग टू रीड. मेरे को प्रोसेस भी ज्यादा करना पड़ेगा. हो सकता है डेफिनेटली कुछ इजी हो, बट लेटर. In final round of the inter-school mathematics tiebreaker, 4-digit number greater than 5,000 that can be formed by using this. Perfect, very easy sum. I'll definitely be solving this right off the bat. Okay, how many even natural digits are there between 100 and 1,000 with all distinct digits? Yeah, I'm solving this right off the bat. Definitely easy sum because numbers are fine. मेरे को logic भी समझ रहा है इसका, and can be done. Yes. दो सिनारियोज भी बन जाएंगे. सही है आंसर. या डन. नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोन इंक्रीज बाय x cubic. ओके, देन द ओरिजिनल रेडियस की इन द वैल्यू. ओके, नाउ सी गाइस, ये सॉल्वेबल तो है. इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द सेम कोन बाय 9. यस, फॉर्मूला ड्रिवन है, बट इसका वर्किंग थोड़ा लंबा रहेगा. एंड बिकॉज व्हाई डू आई नो दिस, बिकॉज आई रिमेंबर डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स. राइट, पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस ड्रिवन है मेरा interpretation in this particular section. So this I'll be putting in as purple. Okay, there are two trains, 30-35, they cross each other 6 seconds, opposite direction. How much time? अरे very easy sum. If they were traveling in the same direction. सही है. So अपने पास 30-35 इसको ऐड कर दो, because वो opposite direction में 6 seconds है. So अपने को total distance मिल जाएगा between the two trains. Now assume 35 meters per second वाला पीछे चल रहा है, 30 वाला आगे चल रहा है. डिस्टेंस दे दो, subtract the 2, that is 5. उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 5 meters per second. टोटल डिस्टेंस अपॉन 5 meters per second कर देंगे. आई थिंक आ जाएगा. ये भी आई एम सॉल्विंग इमीडिएटली.
Okay, question देखकर थोड़ा I'm a little averse to this directly from the figure. Definitely could be an easy question, but I'll keep it for purple. मैं इसको बाद में करूँगा because कुछ directly click नहीं हो रहा है फिलहाल. What is the value of CE? Okay, yeah, I'll be keeping it for later. Yeah. 69th question right now. Gurpreet went to Indian summer restaurant. Total bill 1/3 of the amount by the other three friends combined. Ravi paid 1/3 of the amount. Okay, 3/13 of the amount paid by other three friends. Okay, I've done these kind of questions, but these take time. Okay, and ये एकदम typical questions है. ये वाला especially textbook type का आपका. So इसको मैं purple रखूँगा. I'll definitely be attempting this, but not right now. ये अभी करने जाऊँगा. I know for sure that ये time खाएगा. ठीक है? Okay, guys. Is that it? I think that's it. Okay, AB equal to 25. 1 second, guys. Let me just see. Okay, nahi hai actually. So AB equal to 24. OE is 5. CD is 10. OE दिया है, AB दिया है, तो ये AE आ जाएगा. So उससे OA आ जाएगा, ठीक है. Then find EF. Okay. EF तो बहुत easy हो जाएगा. EO दिया हुआ है. OF ही essentially अपने को ढूंढना है. OD तो same रहेगा, radius है. एंड हमको CD दे दिया है 10, तो DF हो जाएगा 5. सो वापस से पाइदा कोरस लगा लो. डेफिनेटली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ, ये भी एक टेक्स्ट बुक टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन है. अब हाइपोटेन्यूज से आई थिंक ये सर्कल बनाया उन्होंने, सेमी सर्कल. एंड यहाँ पे 21 से उन्होंने ये क्वार्टर बिट बनाया है. एंड ये एरिया का आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. अप्रोच पता है बिकॉज आई सॉल्व दिस सम, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो आई विल बी पुटिंग इट इन पर्पल सेक्शन. Ratio of white paint and tarpaulin oil in 2 different buckets. हाँ, something about guys, these questions, the ratio proportion questions. ये question में भी किया हुआ है perfect. So what they do is initial ratio white paint to tarpaulin oil का दिया हुआ है, so 2:3. But final में उन्होंने जो total mixture दिया हुआ है tarpaulin oil to white paint का 7:5. Right? तो उल्टा दिया है. So you need to be mindful about that. Actively looking for that. Those are traps. Question easy है, question solve हो जाएगा. I will be doing it immediately. X by Y का ही ratio निकालना है. As in how much of product A will you be mixing with how much of product Y? Simple question. I'll be going for it. 73 average weight. Okay, 5 boys 50, 3 boys more add किए, equal heaviest. Okay. उनके average weight है heaviest among the first 5. Join the overall average increased by 3. How much does the heaviest boy? Conventional typical sum. I'll be doing it immediately. No questions asked. P invested in the business with an initial amount of 45,000. After 2 months, Q joined with an investment 20% more than P after 5 months of joining. Okay, now since we are towards the end, right? So one of the things that I would also do. अभी 74th पे हो. I know how to solve this question, but इसको थोड़ा टाइम लग जाता है. Maybe I'm not as fast as some people, but yes, मेरे को इसमें ज़्यादा नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा. So I'll be taking a little more time. So मैं just check कर लूँगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या, because I'm towards the end anyway, right? So MBA ज़्यादा ही actually this one seems a little longer. So this purple and this one purple too, and I'll start solving these two because ये वाला easy है. Investment will take time, and that was the only reason. MBA coaching, total number of students in class 120, ratio boys and girls. Yeah, ratio वाला sum है, so I'll be good. 5 boys leave the class with average age 25 years. 5 girls class, okay, with average age of 22. Yeah, this will also be solving. So you see, there were very few questions जिसमें हमको approach नहीं पता था, right? There were a few questions जिसमें approach मालूम था, but that would be taking time, right? There were a lot of those questions, and so many of them I was solving right on the back, right? So this was my approach, and something that I would be doing while assessing also the entire paper is I would note down कि classes ने या जो भी मैंने test series लिया है उसने वो वाले particular question को कहाँ categorize किया है, right? So say if question number 5 I've missed out and I did not solve, or I got right, but it was in the difficult zone of say medium or lesser, then I have a problem over there. Then I'll be, giving a little more focus and a little more energy towards that question, because
those are the questions that are bare minimum. You need to solve those questions. ठीक है? This is it from my end, guys, about QA. आपको कुछ भी specific problem होगा QA के बारे में तो definitely बताइएगा. ठीक है? I hope there was something that you will be taking away from this. I know मेरा QA का थोड़ा strategy काफी subjective हो जाता है, but I definitely think that there are certain elements also that you could be taking away, like not being invested in question. आपको आ रहा है, but you know that is going to take time. Move on. Mark it for later. आओगे आप बाद में, आपको time मिलेगा. ठीक है? That's it from my end, guys. Study well. Good luck. Last week. Good luck.